Hello and welcome. In this video, we are going to solve some examples on linear differential equations with constant coefficients with higher orders. Higher order का मीनिंग होता है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनकी ऑर्डर 1 से ज़्यादा है। ऑर्डर 1 से ज़्यादा इसका मीनिंग ये होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल रहेगा, मतलब जिसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, उस वेरिएबल का डेरिवेटिव 2 या मोर देन 2 टाइम्स लिया गया होगा। उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर्स। मतलब जितनी बार डेरिवेटिव लिया जाएगा, that number is called as the order of that differential equation. So when the order is 1, मतलब एक बार ही डेरिवेटिव रहेगा, जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल है dy by dx plus x is equal to 0. So this example containing only first derivative, therefore this is a differential equation of first order. और इसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हमने कुछ मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो अगर ये अप्लाई नहीं होता है तो। फिर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, ये भी मेथड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। उसके बाद आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड पढ़ा, जिसमें आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाला था। और उसके बाद आपने रेड्यूसिबल फॉर्म का भी पढ़ लिया। ये सारे मेथड सिर्फ उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं जिसकी ऑर्डर 1 होती है। लेकिन इन अनदर वे, इफ वी विश टू सॉल्व such examples, look at this. The example is d2y by dx square, d2y by dx square. What is that? Just wait, I am searching that equation. d2y by dx square, where it is? Just wait, I am searching the example. d2y by dx square plus 3dy by dx minus 54y is equal to 0. Now we want to solve this example. Now before solving the examples, you just observe that differential equation and try to decide कि ये differential equation exactly किस type का है. Once you decide the exact type of the differential equation, then you can easily decide which method is applicable to solve such a differential equation. Now, in the first term, I am observing that there is only one term which indicates the double derivative of y with respect to x. In the second term, there is a first derivative of y with respect to x multiplied by some constant 3. And in the third term, there is a y multiplied by another constant, that is 54. It means that in this equation, the variable y and its derivatives are present not in the multiplicative form. Therefore, the degree of these variables of each term, the degree of this derivative is 1, the degree of this
this quantity in second term is 1 and the degree of y here is 1. So all the degrees are 1, therefore it is called as a linear differential equation. And all the degrees are same, therefore it is a homogeneous linear differential equation. And look at these constants. फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट कुछ नहीं मतलब 1 है, सेकेंड टर्म का कांस्टेंट 3 है एंड थर्ड टर्म का कांस्टेंट -54 है. तो all the coefficients are constants, therefore the type of this differential equation is linear. It is a linear plus it is a homogeneous and plus with constant coefficients. And when we observe that these three terminologies attach with the given differential equation, then this can be solved by coefficients, solved by auxiliary equation method. So now decided we are using auxiliary equation method or characteristic equation method. So how to write the solution? So first write the solution and write the given differential equation in the operator form. How you can write operator form? So you write the bracket. In the first term there is a operator of double derivative and that operator is applying on y. So here I am writing only operator. So it is d2 by dx square. Don't write y, just write only operator. Plus 3 keeping as it is. And now here the operator is d by dx. So you just write the operator only. Now it is constant -54. This is a y and on this y no operator is applying, therefore you don't write anything here and you put y here is equal to 0. Its meaning is that इस ब्रैकेट में जो क्वांटिटी दिख रही है that is called as a operator and when you apply the whole operator on y you will get this equation. तो इसलिए इस इक्वेशन को हमने ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा ताकि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार कर सके और ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करके देता है ये ब्रैकेट में जो है वो ऑपरेटर. नाउ यहां जो ऑपरेटर है d बाई डी एक्स एंड उसका और एक बार डेरिवेटिव, तो जस्ट पुट दिस ऑपरेटर पुट d बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम वेरिएबल एंड आई एम हियर कंसिडरिंग द वेरिएबल इज r. ठीक है. Therefore, the auxiliary equation of given differential equation is. So you have considered this d by dx is equal to r. Therefore, replace this double derivative by r square. Then write the second term constant, then into r. -54 is equal to 0. That means this operator I have converted into algebraic expression. ये algebraic expression है जिसको हम quadratic equation बोलते हैं और इसी algebraic expression को जो correspond करती है इस operator के साथ उसको बोला जाता है auxiliary equation और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब इस अल्जेब्राइक इक्वेशन को मींस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें जो भी हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के उस मेथड से सॉल्व करेंगे. सो इन द स्कूल लेवल ऑलरेडी यू हैव स्टडीड हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. यू कैन solve this quadratic equation by factorizing the left hand side, or you can solve this quadratic equation by quadrature formula. You know quadrature formula is minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a.
You can use that formula. Or otherwise, I am suggesting here a new method to solve the quadratic equation, and that method is called as a Babylonian method. So how to use Babylonian method to solve such a quadratic equations? So the first step is you keep this quadratic term in left hand side. Only quadratic term in the left hand side, and remaining terms you transfer to the other side. So that's why I can write this is r square is equal to minus 3r plus 54. Okay. Now try to make the coefficient of this quadratic term as a 1. यहाँ पर तो already 1 है, बट अगर किसी एग्जाम्पल में यहाँ 1 के अलावा कोई और नंबर आता है तो आप उसी नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड करके यहाँ पर 1 बनाएंगे. पर यहाँ 1 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू कीप द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज. अब ये जो r का कोएफिशिएंट है दैट इज -3, यू टेक इट्स हाफ. ऑलवेज यू आर कंसिडरिंग द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस r. नाउ कीप r एज इट इज एंड प्लस 54. अब ये जो हाफ आपने यहां पे किया, उस हाफ को आप थोड़ी देर के लिए इधर लिखेंगे -3/2, और यही आपको आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देगा. इसलिए इसको हमने थोड़ी देर के लिए साइड में लिखा है. ओके. नाउ कम एट दिस इक्वेशन अगेन. सो इट इज r square is equal to, write this -3/2 as it is, and instead of this r you write this number जो हमने बाजू में लिखा था. वही नंबर एज इट इज हम उस r के जगह पर लिखेंगे, एंड प्लस 54 कीपिंग एज इट इज. नाउ यू जस्ट कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन. So r square is equal to minus become plus, 3 3s are 9, 2 2s are 4, so it is 9/4 plus 54 can be written as 54/1, and this is equal to r square. Now I wish to add these two fractions, but we know that to add fractions, the denominator of the fractions must be same. But here, one of the denominator is a 4 and another denominator is a 1. These two denominators are not equal. That's why we are using cross multiplication method to add these two fractions. Now tell me, what is the method of adding these two fractions whose denominator is not same? तो सबसे पहले आप ये डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे. उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 1 into 9, ये 9 यहां लिखा जाएगा, प्लस 4 times 54, and that is I think 216. So I'll get this denominator as a 4, and 9 plus 216 is nothing but 225, and this is the value of r square. Now taking the square root, I will get, this implies r is equal to square root of 225 is 15. बट वी नो दैट जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस और माइनस साइन देना होता है. तो r की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225 is 15, and square root of 4, which is in the denominator, that is 2. That means I am getting two values of this r. One is plus 15/2 and second is minus 15/2.
Now, these are the not roots, these are the values of r. So now I am finding the roots. Therefore, roots of quadratic equation are, now you take this number minus 3 by 2 plus one of the value of r, that is 15 upon 2, and again take this value minus 3 by 2 once again plus another value of r, that is minus 15 upon 2. Alright, so while adding these two fractions, see here denominator is same जब होता है तो मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत होती नहीं है. ये सेम है तो आप जो भी सेम है उसको कॉमन लिखिए. minus 3 plus 15 is 12. And here the denominator is same, so write common. 2 minus 3 plus minus become minus, so minus 3 minus 15 is minus 18. Just simplify this fraction. 12 upon 2 is 6 and minus 18 upon 2 is 9. Therefore, these are the roots of quadratic equation. And we have calculated these roots by using Babylonian method. It's quite simple. अगर आपको ये मेथड बिल्कुल पसंद नहीं आया तो आपके पास जो मेथड जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मोटिव हमारा यही है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड एंड फाइंड द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए दो, एक है 6 एंड एक है -9. तो इसको हम यहां लिखते हैं. तो जो रूट्स आए उस फर्स्ट रूट को हम लिखते हैं r1, that is 6, and another root is denoted by r2 and that is -9. Now you have to check these roots. That means whether these are real numbers or complex numbers, whether these are distinct real numbers or repeated real numbers. So मैंने देखा तो यहाँ 6 एक रूट है, -9 एक दूसरा रूट है, मतलब ये दोनों रियल नंबर है और दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है. तो जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है. Now I am writing the solution. So here you can write here roots of auxiliary equation are real and distinct. Therefore general solution. Why I am calling general solution, I will explain. General solution of given differential equation is let me check. हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसमें किसका डेरिवेटिव लिया गया था, तो उसमें y का डेरिवेटिव लिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जिसका डेरिवेटिव लिया जाता है उस इक्वेशन में उस वेरिएबल को आप यहां लिखेंगे इक्वल टू, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कितने मिले थोड़ा चेक कीजिए. हमको 2 रूट्स मिले थे, इसलिए इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए यू नीड 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हम डिनोट करते हैं C1 एंड C2. तो C1 एंड C2 कांस्टेंट होते हैं, बट एग्जैक्टली उसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती है, वो कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है. That's why they are working like a variable, but the value is constant. Therefore, they are called as a arbitrary constants. So, first arbitrary constant I am writing here C1. Then you write the exponential function. Then you write the first root of the auxiliary equation and multiply by the variable जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जिससे डेरिवेटिव लिया गया था. तो y का डेरिवेटिव x से लिया गया था, इसलिए यहां x आएगा. अगर y का डेरिवेटिव t से लिया होता तो यहां t आ जाता. इतनी बात याद रखिए. प्लस
दूसरा arbitrary constant is denoted by C2. Again write exponential function. Second root of the auxiliary equation is -9 multiplied by the independent variable in the differential equation, that is x. So dear student, this is our required general solution of given differential equation. Why it is called general equation? Because इस solution में दो arbitrary constants मौजूद है C1 and C2, और ये जिसका सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार लिया गया है उस इक्वेशन में, तो 2 बार लिया है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 है, तो जितनी ऑर्डर होती है उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट सॉल्यूशन में होने चाहिए, तभी उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहां 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ऑर्डर भी 2 थी, दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। सॉल्व equation is 2d2y by dx square, okay, plus 5. Here instead of x you take t, then 5 dx by dt, and here instead of y you take x. So 2 times d2x by dt square plus 5 times dx by dt minus 12x is equal to 0. So right hand side is 0, therefore it is homogeneous. Homogeneous because all the powers are 1. Here the dependent variable is x and the coefficients are constant. So you can write here this is a homogeneous plus it is a linear because the power are exponents of each term are 1. So it is linear and the coefficients are constant 2, 5 and minus 12. So with constant coefficients, and because of that we are using which method? Auxiliary equation method, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हम यूज करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड, और आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड में करना क्या होता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना होता है। तो हाउ वी कैन राइट ऑपरेटर फॉर्म? यू राइट द ब्रैकेट, ये 2 एज इट इज लिखिए, यहां पर ऑपरेटर है 2 टाइम्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज d2 by dt square, दिस इज योर ऑपरेटर, don't write x here, plus 5 times operator is d by dt, single operator, then minus 12, और यहां पर कोई ऑपरेटर नहीं है और x भी लिखना नहीं है, x तीनों का कॉमन यहां लिखना है, इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी हो जाएगी डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड विच इज ऑपरेटिंग ओवर दिस डिपेंडेंट वेरिएबल x। तो आज पहली बार इस एग्जाम्पल में डिपेंडेंट वेरिएबल का काम x कर रहा है, वरना हमको आदत होती है हमेशा y को ही डिपेंडेंट वेरिएबल लेने की, लेकिन एग्जाम्पल जैसे है वैसे हमको सॉल्व करना है। सो नाउ आई एम राइटिंग व्हाट ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ given differential equation is how we can write? Tell me. So it's very simple. You put this operator d by dt is equal to some denoted by some other variable. So I am denoting this d by dt by another variable, that is r. So using this fact, the first term will become 2 times double derivative, means it is r square, plus 5 times d by dt, that is 5r, this is minus 12,
and equate with 0. So this is your auxiliary equation and it is nothing but a quadratic equation in variable r. अब इसको हमको सॉल्व करना है. अब हम बेबीलोनियन मेथड का इस्तेमाल करते हैं. तो बेबीलोनियन मेथड में हमने आपको बताया कि सबसे पहले जिस टर्म में जो क्वाड्रेटिक टर्म है, मतलब जिसमें स्क्वायर होता है, उस टर्म को पहले आप लिखिए एंड रिमेनिंग टर्म्स को आप दूसरे साइड में भेज दीजिए. तो ये बन जाएगा -5r + 12. ओके, देन मेक श्योर अबाउट this coefficient of this quadratic term must be 1. तो ये 1 नहीं है, ये 2 है. तो इसको हमें 1 करना होगा और 1 करने के लिए हमें इस 2 को हटाना होगा और वो हटाने के लिए we can use the operation division. So dividing both sides by 2, I will get here r square is equal to -5/2 into r plus 12 upon 2, that is 6. Now the next step is जब r square का कोएफिशिएंट 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको r का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ लिखना है. तो 5/2 का हाफ होता है 5/4. ये r as it is and plus 6. और ये जो आपने हाफ नंबर लिखा उसको आप इधर अगेन लिखेंगे. नाउ अगेन come at this equation, r square is equal to -5/4 into r, and instead of this r now you are putting this number. So it is again -5/4 plus 6. So what is this? Multiplication. Minus become plus. 5 times 5 is 25 upon 4 times 4, that is 16 plus 6, and its denominator is 1. Now we have to add these two fractions, but the denominators are not equal. Therefore denominator का multiplication denominator में लिखिए and then cross multiplication. तो 1 times 25, that is 25 plus sign जो है वो as it is, and 16 into 6 यहां लिखना होगा. तो 16 into 6 की वैल्यू आती है 96. Alright. Now what is the addition? So addition is here 16 and addition of this is 121. So this is the value of r square, and therefore taking the square root, the value of r is plus or minus square root of 121 is 11 and square root of 16 is 4. So the value of r is plus 11/4 as well as minus 11/4. Now I am finding the roots of quadratic equation or auxiliary equation. तो फर्स्ट रूट कैसे निकलेगा? ये जो नंबर यहां पर ऑलरेडी आपने लिखा है दैट इज -5/4, उसको लिखिए प्लस वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस r एंड दैट इज 11/4. तो ये एक रूट देगा एंड दूसरा रूट के लिए अगेन ये वैल्यू लिखिए -5/4 प्लस another value of this r and that is -11/4. So 4 सेम है तो हम उसको कॉमन लिखते हैं. Then 11 minus 5, that is 6. And here 4 common. The -5 minus 11 is -16. Now here we can simplify this fraction by dividing 2. So it will give us 3/2 and here the answer is -4. And these are the roots of given auxiliary equation. 3/2 is one root and -4 is another root. Look at these roots. These are real numbers and दोनों अलग अलग है, मतलब ये डिस्टिंक्ट भी है. तो हम रूट्स लिखेंगे तो
Therefore, the first root is denoted by r1, that is 3 by 2. And another root is denoted by r2, and that is कितना आया था? -4. Okay. And these two roots are real and distinct. Therefore, roots are real numbers and अलग अलग है तो ये distinct भी हो गए. Therefore, general solution of given differential equation is फिर से आपको इक्वेशन पे आना होगा. इस इक्वेशन में पता कीजिए कि डेरिवेटिव किसका लिया गया है. यहां पर डेरिवेटिव x का लिया है विथ रिस्पेक्ट टू t. तो हमारा जनरल सॉल्यूशन में x का आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ t. ठीक है. कितने रूट्स मिले थे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के? 2 रूट्स मिले थे, इसलिए आपको 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स लेने होंगे डिनोटेड बाय c1 एंड c2. तो एक लेंगे हम c1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट रूट लिखा जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस वेरिएबल से जिस वेरिएबल से डेरिवेटिव लिया गया था. तो इस एग्जांपल में डेरिवेटिव t से लिया गया था तो यहां t लिखा जाएगा, प्लस c2 into e to the power another root -4 into the variable t. And this is your required general solution of given differential equation. Okay, quickly we can solve one more example. So dear students, look at this. I am writing the example. Solve 9 times d2x by dz square. Oh my god, here dependent variable is x and independent variable is z, plus 18 times dx by dz, right, minus 16z is equal to 0. So right hand side is 0 and all the powers of this dependent variable and its derivatives are 1. Therefore, it is a homogeneous linear. And look at the coefficients. One is 9, another is plus 18 and third one is minus 16. तो ये जो आपका इक्वेशन बन गया ये बना homogeneous linear. So it is homogeneous plus linear plus with constant coefficients. And we know that जब ये तीनों conditions यहाँ आते हैं, कौन से 3? homogeneous, linear and constant coefficient, तो हमें यूज करना होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला मेथड. तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने से पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना होगा. सो हाउ वी कैन राइट द ऑपरेटर फॉर्म? देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस, ब्रैकेट 9 times write only operator, that is d2 by dz square, plus 18 write only operator, that is d by dz, minus 16, don't write z here, and यहाँ का z और यहाँ का z हम commonly यहाँ लिखते हैं equal to 0. Therefore, auxiliary equation of given differential equation is, ये 9 as it is लिखते हैं और ये देखिए d by dz के जगह हम r लेंगे, है ना. तो ये डबल डेरिवेटिव है तो r का स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस 18 d by dz को r माना था हमने तो r minus 16 is equal to 0. And what is this? This is quadratic equation. Now we can solve this quadratic equation again by using Babylonian method. The first term is keep the quadratic term in left hand side. Keep only quadratic term in the left hand side and remaining term transfer to the right hand side.
So according to that, I can write 9r square is equal to minus 18r plus 16. Now make the coefficient of this quadratic term as a 1. It is not 1, it is 9. So dividing both sides by 9. So I will get r square is equal to, here 9 get cancelled. यहाँ पर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -2 टाइम्स r प्लस यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो कोई डिवीजन होने वाला नहीं है, तो इट इज 16/9. Now the next step is r square is equal to, you write the half of this coefficient, that is -1, और जैसे ही आपने हाफ यहाँ लिखा आपको वो हाफ नंबर यहाँ भी लिखना होगा जो आपको कैलकुलेट करके देगा फाइनल रूट्स. Now keep this r as it is plus 16/9. Now आखिरी स्टेप में हम ये -1 लिखते हैं और इस r के जगह पर ये नंबर अगेन सब्सटीट्यूट किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो -1 plus 16/9. So -1 multiplication is 1 plus 16/9. Here the denominators are not equal, therefore denominator का multiplication in the denominator and cross multiplication, 9 into 1 is 9 plus 16 into 1 is 16. Therefore you are getting 25/9. This is the answer of r square. Now you take the square root, therefore r is equal to plus or minus 5/3. Okay, now come at here. Therefore roots of auxiliary equation r, कैसे निकालते हैं रूट? ये जो नंबर है ये पहले लिखा जाएगा प्लस आपकी जो r की वैल्यू आए, 2 आए थे उसमें की एक वैल्यू यहां लिखी जाएगी, दैट इज 5/3. एंड अनदर रूट इज अगेन -1 प्लस इस r की जो सेकंड वैल्यू है दैट इज -5/3 यहां लिखी जाएगी. अब इसका एडिशन कीजिए, आपको रूट्स मिल जाएंगे. सो हियर अगेन 1 है तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, और यहाँ भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऐसा मिलेगा. सो यू आर गेटिंग 5 - 3 दैट इज 2/3 and here -8/3. These are the two roots of your auxiliary equation. See, these are the real numbers as well as distinct. Therefore, this 2/3 is denoted by r1. So I can write let r1 is equal to 2/3 and another root is denoted by r2, and what is that? That is -8/3. -8/3. So what is your observation? These are distinct real numbers. और जब आपके रूट्स डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स होते हैं तो आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हो? Therefore general solution of given differential equation is आपको अगेन उस ओरिजिनल इक्वेशन पे जाना होगा और कंफर्म करना होगा कि उस इक्वेशन में डेरिवेटिव किसका लिया था. तो यहां पर डेरिवेटिव x का लिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू z. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दैट x हियर एंड नाउ दिस एक्सप्रेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ z. तो 2 रूट्स आ गए थे इसलिए हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है. तो पहले लेते हैं c1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट रूट लिखना है इनटू वेरिएबल. कौन सा लिखेंगे वेरिएबल? तो आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z लिया गया था इसलिए यहां पर z लिखा जाएगा. 2/3z प्लस अनदर आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज c2 e to the power second root into z. So this is our required general solution of given differential equation. I hope that
कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. In the next lecture, we will see what will be happen when the roots of auxiliary equation will not be equal. Sorry, will be equal. मतलब आप जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको जो दो रूट्स मिलेंगे वो दोनों सेम रहेंगे. अभी तक हमारे पास जितने रूट्स मिले वो सारे डिस्टिंक्ट थे, लेकिन जब पहला रूट भी मान लीजिए 2/3 है और दूसरा रूट भी अगेन 2/3 है, तो उस वक्त क्या दिक्कत हमें आएगी और हम उस दिक्कत को कैसे पार करेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए बच्चों, टेक केयर, गुड बाय.